Jai Shri Ram. We are going to begin with the preliminary mantras, purificatory mantras now. Sprinkle water on all the prayer groups and on all the participating devotees. Om pavitraha pavitro va sarvavasthangapopi va yah smaret pundarikaksham sabhahyabhyantarah shuchihi. Sip water from the palm of the right hand, once for each mantra. Om Keshavaya Namaha, Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Wash your hands. Om Rishi Keshaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Madhusudhanaya Namaha. Okay, put a kus ring on the right ring finger. Om Pavitresto Vaishnavyo Saviturva Prasva Utpunamya Chidrena Pavitrena Surya Rashmabhihi Tasyate Pavitra Pate Pavitra Putasya Yatta Kamaha Pune Tachakeyam. Use your thumb, place a chandan dot on your forehead. Om Chandanam Bandate Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harte Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Light your lamp. Om Bodhipa Tvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamayankatang Puja Grihastejo Pravardhaya. Om Deepaya Namaha. Sprinkle water around yourselves. Om Prithvitvaya Vrita Loka Devitvam Vishnunadhrita Tvam Chadharya Mam Devi Pavitram Kuru Chasanam. Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyana Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mandra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swastina Indro Vridashravaha, Swastinah Pusha Vishwavedaha, Swastinastarikshur Arishtanemihi, Swastino Brihaskatir Dadhatu. Om Payah Pridhivyam Paya Oshadhishu, Payo Devyantarikshe Payodhaha, Payaswati Pradishah Santu Mahiyam. Om Vishnuraratmasi Vishnu Shnaptreso Vishnu Surasi Vishnurdhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendro Devata Varuno Devata. Om Dyahu Shantir Antarikshagvam Shantihi Prithvi Shantir Apah Shantir Oshadhayah Shantihi Vanaspatayah Shantir Vishwadevah Shantir Brahma Shantihi Sarvagvam Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredhi. Om
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतासो उद्भिदः देवानो यथा सदमेद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतान् देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां ग्वं सख्यम् उपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तान् पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत्। ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णयायुगम्। ॐ तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियन् जिन्वमवसे होमहे वयम् पूषानो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निम् आतरः शुभं यावानो विततेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसौ विश्वेनो देवा अवसागमन्निह। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम आक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनुर्भिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजर सन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिषतायुर्गन्तौः। ॐ अदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः स ओजो मयि प्राणपानौ। ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रेर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृभनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। ॐ आयुष्यं वर्चस्य ग्वं रायस्पोषमोदबिदम् इदग्वं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राया विशतादुमाम्। ॐ द्यौः शान्तिर् अंतरिक्षग्वं शान्तिः पृथ्वी शान्तिर् आपः शान्तिर् ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वदेवाः शान्तिर् ब्रह्मः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ॐ हे रंभ त्वमे ये हि अंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष लाभ पितो पितः
नागास्य नागहारत्वं गणराज चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्ये पाशाङ्कुश परश्वधे आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतौः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा ॐ ध्यायेत् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्ममासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामां कारूढ सीतामुखकमल मीललोचनं नीरधाभं नाना अलङ्कारदीप्तं धततमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टा डमरुकसहितम् अङ्कुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॐ लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॐ सीताराम पवनसुत हनुमान राधे कृष्ण की जय।
नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पटाचे कटकिन काचिनी काचे नील जलज सुंदर तन सोहे चविलक सुर नरी मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलख गुलाले आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पैपन पुतन नहीं तार्यो अकाबका सुर मार्यो मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखत नंद लाला सुरपति जब ब्रज चरियोर साई मुसरधार बारी बरसाई लखट लखट ब्रज चाह बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखियो शोधमन ब्रह्माधिकारी मुख मन चाह भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाट कलिए तब तुम लियो चरण छीन दई निर्बल कीयो कर गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा कीर्ति महा असुर संहार्यो कंस केश पकड़ धर मार्यो मात पिता की बंदी चुराई उग्र सेन का राज दिलाई मन से मृतक चहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो बहुमसुर मुर दैत्य संहारी लाई शत दस सहस कुमारी दैवी महितन चीरी संहारा जरा सिंधु राक्षस का हमारा असुर बकासुर आधिक मार्यो भक्तन के सब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख तारियो तंदुर तीन मुठ मुख डारियो प्रेम का साग विदुर घर मांगे दुर्योधन की मेवा त्यागे लखि प्रेम की महिमा भारी ऐसी शान दीन हितकारी भारत की भारत रखा के लिए चक्र कर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाई भक्तन हृदय सुधा बरसाई मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गए बजा कर ताली राना भेजा सांप पितारी शादी ग्राम बने बनवारी निज माया तुम विदेही दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो तब शत निंद करी तितकाला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी
मम कुमति वायो, क्षमाहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहे पदारथ चारि। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन की रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राधा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सही मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
लगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। Bhagavad Gita, chapter 3, verse 34. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो वयस्थितौ तयोर्न वशमगच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमगच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। जय श्री कृष्णा। इस श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं कि विषयों के लिए पसंद और नापसंद इंद्रियों में रहते हैं। किसी को उनके अधीन नहीं आना चाहिए क्योंकि वे राजमार्ग लुटेरे हैं। Shri Krishna says, likes and dislikes for sense objects reside in the senses. One should not come under their sway because they are highway robbers. So having explained that, our inborn, our ingrained type of behavior, our characteristic, the biggest obstacle in Karma Yoga, Shri Krishna now points out their precise location. He says that this particular type of behavior manifests as likes and dislikes for material objects. This type of behavior resides in our senses, that is, the eyes, the ears, nose, skin and tongue. तो पहले हमारी पसंद और नापसंद को देखते हैं. So first, let's look at our likes and dislikes. The only way we can truly understand the shape of our inborn characteristic is through a deep examination of our likes and dislikes. हर इंसान पसंद और नापसंद करता है. Every human being harbors likes and dislikes. It is so strange that two children, having grown up in the exact same home and family environment, reveal such different likes and dislikes. तो ये पसंद और नापसंद कहाँ संग्रहित है? So where are the likes and dislikes stored? Excuse me. They reside in our sense organs. The tongue is attracted to the taste of freshly fried chips, and the same tongue doesn't like the taste of spinach. Similarly, the eyes likes a certain kind of form and does not like another. In the beginning of our spiritual life, if we say, I like doing this and I don't like doing that, it's all right. It's accepted. But in a mature state, if we start saying, for example, I like this environment and I don't like this work, then it is immature spirituality. Because spirituality means you start shedding these likes and dislikes that are coming from the lower nature. And what is this lower nature? It is anything contrary
to the will of Bhagwan. But when we learn to control these likes and dislikes, then the true higher nature of the soul will become clear. Actually, those who release these likes and dislikes, their suffering somewhat comes to an end. So having said to Arjun in the previous verse that one should work in accordance with their nature, Sri Krishna is now showing the pathway ahead, and he is saying that while discharging our duties, likable and unlikable situations will both arise. This likable and unlikable situation is because of our minds and senses. You see, this material mind and material senses, when they get the objects of their desire, the sensation of likingness is created. So what the mind does is it starts hankering over the sensation of happiness and pleasure. And when there is pain, the mind fights it off. The mind wants to avoid pain at all costs. So our material mind is always wanting to seek a situation of happiness and avoid a situation of pain. And as long as we remain in this level, we are a slave of the mind. But you see, as we mature, we learn to put raga dvesha, that is, likes and dislikes aside, and we do our duties. We are all working through this difficult economy in Kali Yuga, are we not? Are we liking it? Half of the people are afraid that they will lose their jobs, and rightfully so, because there will be no other job. Therefore, we put our likes and dislikes aside because we have to do our job. We must remember also that these likes and dislikes should not be given importance because they are all coming from the mind and senses. Shri Krishna says to Arjun that like summer and winter seasons come and go, similarly, the senses in contact with the object of the world creates the senses of pleasure and pain. So you learn to tolerate them. So there was the saint who needed an operation on both his hands. And the doctor said he has to have an anesthetic for this. The saint refused to take this anesthetic and said, I will tolerate the pain. The operation was done on both arms without the anesthetic. And the doctor asked the saint, how did you do this? The saint said, this is the philosophy of the Bhagavad Gita, that the sensations of pleasure and pain are coming from the contact of the senses with the objects. So, by learning to tolerate to that extent, this saint had gained such control over his mind. You must have heard people always say this, well, it's all in the mind. You see, we are not supposed to be enslaved by the mind. We are supposed to be the master of the mind. Shri Krishna says to Arjun, the uncontrollable mind is our biggest enemy. But there can be also no better friend than a controlled mind. So therefore, what is the solution? We should not come under the sway of likes and dislikes. By being aware of them, especially when they strike, by using our intellect to guide us and by continually reminding ourselves of the higher level we have set for ourselves in Karma Yoga. We should not let them create a roadblock in our path. Like an elephant that keeps moving on its path, even though dogs bark at it, we too should keep likes and dislikes at bay and never lose sight of our path and objective. A good example is this. Arjun loved fighting in a war, but he did not like the Mahabharata war,
simply because his relatives were on the other side. So Sri Krishna, who represented the intellect, guided him towards the right path. Another example is when a doctor prescribes us bitter medicine. We may not like it, but we take it nevertheless. In this verse, Sri Krishna compares likes and dislikes to paripantino, that is, highway robbers, who target travelers that are unprepared and not alert. These robbers will come out of nowhere and distract travelers from their path. Similarly, the likes make us run towards them, and dislikes make us run away. But ultimately, both take us away from our path. But by being constantly alert, that like and dislikes can arise. We can reduce their effect or impact. Jai Shri Krishna. जय श्री राम। रामायण पाठ। जेहि सुमिरत सिद्धि होय सीताराम, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय सीताराम, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल सीताराम, पंगु चरहि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल सीताराम, द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम सीताराम, तरुण अरुण वारिज नयन, करो सुमम उरधाम सीताराम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह सीताराम, कुमार मन करुणायन, जाहि दीन परनेह सीताराम, करौ कृपा मर्दन मयन, वंदो गुरुपद कंज सीताराम, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज सीताराम, जासु वचन रवि कर निकर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बालकांड दोहा 160। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले हो जुगति समेत, नाम हमारी भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कहा नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना, सदा रही अपनो अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिव ही संदेहा, जोसी सोसी तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिय सब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलेहु अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाऊ कहु महिपाला,
यहाँ बसत बीते बहुकाला, अब लगी मोहि न मिलहु, मैं न जनावहु काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तुलसी देख सुबेशु, भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखु, वचन सुधा सम अस नहिय। अच्छा, so the katha of Pratap Bhanu continues, whereupon Pratap Bhanu has arrived at the hermitage, at the ashram, and a Muni has welcomed him and asked him to spend the night there because it has become dark. Of course, this Muni is actually a previous king who has enmity with Pratap Bhanu, and so he intends to take revenge against Pratap Bhanu, and therefore he is disguised as a Muni. And Pratap Bhanu has asked him a question, who are you? What is your name? And the king, or rather the Muni, has answered that now my name is Bhikari. Right? So I am a poor person, I am a beggar. So the conversation now continues between the two. When the king Raja jab Muni ka yah uttar suna, when he heard the answer of the Muni, तो राजा ने उससे क्या कहा? राजा ने कहा कि आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं, you those people who are the repositories of wisdom and who are free from pride, just like you are. तो इसका अर्थ है कि राजा को यह महसूस होता है, he feels that this Muni is one who is filled with wisdom, ज्ञान से, और वो and he is also free from pride. And he says such people always keep their reality concealed. They hide who they really are, even though they may be proficient in so many different ways. And he says these people, they sabha vidhi kushala kuvesha banaya. Kuvesha means they like to dress in tattered clothes. So they don't wear proper clothing as such. And then he say, this is why the saints have been praised in the Vedas. He says, Tehi te kahi sant shruti tere. The sants, Shruti refers to the Vedas, they say param akinchana priya hari kere, that those who are indigent, akinchan, those who are poor, those who require charity, they are always dear to Shri Hari, priya hari kere. Right? So this is what the king is saying, because he believes that Muni is a Bhikari, but he also believes that the Muni is one filled with wisdom. He doesn't have any pride. And then he says कि आपके समान निर्धन, भिखारी और गृहहीनों पर ब्रह्मा तथा शिव जी को भी संदेह होता है. So even Brahma and Shiv sometimes are not sure about people who are nirdhan, who are penniless, bhikari, who are poor, and griyahin, who are homeless. So even they cannot distinguish between these kinds of people. He says, Josi, Sosi, Stab, Sharanamami. Whatever the case, Josi, Sosi, whatever the case may be,
Tab charan namami. Namami means I salute, I fall down at your feet. Main aapko pranam karta hu. And he says, Hey Swami, he addresses the Muni, Hey Swami, oh my master, aap mujh par kripa kijiye. Please shower your grace upon me. Show me your favor. Kapati Muni. So this Muni, because he's not really a Muni, he's in the disguise of a Muni. राजा को स्वाभाविक प्रेम और अपने में विशेष विश्वास देखकर, when this Kapti Muni, when this Muni realized that the king Pratap Bhanu was naturally attracted to him and he had kind of unconditional faith in this Muni. So what did he do? Sab prakar se, in every possible way, Raja ko apne vash mein karke bola. He then decided to take full control of this king. In other words, mental control of the king, because he realized that here was a perfect victim for me. And he says to him, Hey Sujan, oh good individual, good person, सुनो, मैं शुद्ध भाव से कहता हूं कि यहाँ रहते मुझको बहुत समय बीत गया है. So he continues to give more information about himself, and he says that I am telling you with shuddha bhava, in a very honest way. I'm telling you that I have been living here at this ashram for quite some time now. And then he says, अब तक न कोई मुझे मिला और न मैंने किसी को जनाया. He says, but I have kept away from all worldly things. I haven't had contact with anybody. I haven't allowed anybody to make any kind of contact with me. So I have almost lived the life of a recluse in this ashram. And why is this so? Kyoki, because he says that lok pratishtha, when we try to become popular in the world, when we try to become everybody's friend and come into contact with the mundane issues of the world, then those lok pratishtha, that grandeur that we get from contact with the world becomes like a fire which will turn into ashes the tapa that one does in a one. So he feels that any worldly contact is not going to be good for him because it would serve as a destructive force for the activities and the efforts that he's putting in insofar as his tap is concerned. And that is why he remained aloof from the mundane world, from the material world. Tulsidas ji kahte hain. So now Tulsidas comments. While the story is going on, Tulsidas finds a moment here within the katha to make a statement. And what does he say? He says ki sundar vesh dekhkar. When we see somebody dressed in a very elegant way, in a very expansive way, मूर्ख ही नहीं, not only will fools, चतुर मनुष्य भी, even the intelligent ones, धोखा खा जाते हैं. So very often we are easily attracted by the well-dressed individual. We see people well-dressed, dressed in perhaps clothing that is branded, that have brand names in it, and we get easily taken in by the dressings of people without really understanding who the individual is. So Tulsidas is making a statement here. He's making an important point here that we are very often taken in by the way people dress. Sundar vesh dekhkar. Sometimes we think that somebody is handsome or somebody is beautiful, and we get carried away
by that beauty or by that handsomeness or by the clothing that a person wears. तो इसीलिए तुलसीदास कहते हैं वो धोखा खा जाते हैं, they become deceived. One needs to remember, Tulsidas says, कि मोर देखने में सुंदर है. When you look at a peacock, it looks very, very beautiful, no doubt. अमृत के समान वाणी है. Its voice is like nectar. It is actually life-giving. It gives so much of joy and happiness. परंतु, but भोजन उसका सांप ही है. But what does he live on? What does he sustain himself on? What does he eat? The peacock eats snakes. So this is why Tulsidas, in the middle of this kahani, wants to give us a lesson to say that don't go by किसी के वेश रूप से धोखा मत खाइए. Don't be deceived. Don't be misled by somebody's looks or by the way somebody dresses and assume that because the person is dressed in a particular way, that is a person who might be of benefit to us, who might be favorable towards us. Because even though the peacock, which looks very beautiful, which sings beautifully, even that, its khurag, its food is a snake. So we need to be careful of those situations. तो यहाँ पर हम इस रामायण पाठ को विश्राम करते हैं. कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. पतवार के बिना ही मेरा नाव चल रही है. पतवार के बिना ही मेरा नाव चल रही है. बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है. अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है. मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है. मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है. तेरी बदलतों से
सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी दया से सब काम हो रहा है। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम मेरा देखा घन श्याम मेरा देखा। श्याम मेरा देखा घन श्याम मेरा देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम 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 देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। मथुरा में देखा मैंने, मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम मेरा देखा घन श्याम मेरा देखा। श्याम मेरा देखा घन श्याम मेरा देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गोकुल में देखा हमने, गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गए चराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। गए चराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम मेरा देखा घन श्याम मेरा देखा। श्याम मेरा देखा घन श्याम मेरा देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधे 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 जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंदन जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कंद काली, राधिका चमक रही आली, लटन में ताहे बनमाली, ब्रह्म सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बल से देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रस गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलश कलहरणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अदकीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, जहाँ दिशि गोपी ग्वाल देनु, बजत मृदंग चांदनी संग, कटक भव फंद तेन सन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष त्वां परमेश्वर। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी की जय। श्री बजरंगबली महावीर स्वामी की जय। जग जगनी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सब पितर देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।